Hello friends, today I would discuss for you the concept of base erosion and profit sharing. What it is used in the UPSC economics section, UPSC General Studies economics part. It is come into light. What is base various MNCs? What they are doing is they are avoiding their taxes, payment of taxes in a particular country, like in our country India. What is happening is they set up their manufacturing unit or the primary business earning activity in India and shift their office to some other country like Mauritius or any other low tax payment countries. These are called tax havens. We will discuss about these things in details. A brief idea I'm giving you here. This is like they in Mauritius and other countries, Switzerland is there. What they do is they ask the companies to pay tax at the rate of just 5% of their total earnings. Suppose in India a company is there, company XYZ Limited, private limited. What they are doing is they have set up business amounting net worth amounting to rupees 30,000 crore, and after investing 30,000 crore rupees in the India, they are earning a profit of let's say 1500 crores. In India they have to pay tax to the Indian government at the rate of 30% of this profit of 1500 crores. So 1500 crore का 30% आपका हो गया 450 करोड़ रुपीज़. सो 450 करोड़ का टैक्स उन्हें इंडिया में देना पड़ेगा. बट the same tax in tax rate of Mauritius or Switzerland is 5%. So on 1500 crores they have to pay a tax of just 5%. That is a saving of how much? You can see this is 5% tax rate is 75 crore rupees only, whereas in India they have to pay 450 crore. So they are having a saving of 375 crores. So why these countries like Mauritius they enable or Switzerland is there, why these countries they enable these companies, private companies, XYZ or ABCD Limited, to set up their office in that country. What this office is a kind of a simple flat, 2 BHK flat is there, 3 BHK flat is there, or a small shop, rented shop, and that too not a permanent shop, a rented shop is there. They open their office, they get it registered as the office of XYZ Limited. Now from XYZ Limited Mauritius they invest funds of rupees 30,000 crore in India. So legitimately कायदे से अगर देखा जाए, this profit they are earning of 1500 crore they are earning using Indian resources, Indian water. If say some soft drinks company is there, they are using Indian water and earning profit of 1500 crores. They are using Indian cheap labor, they are using Indian resources, Indian governance structures to earn this profit. Whereas Mauritius, it is just giving them a flat on rent. So our country is going into loss in economic terms. If we see, what are we getting is just 30,000 crore one time investment and some form of employment. We have to provide them power, we have to import coal for providing them power, we have to provide them entire infrastructure, transport, logistical support, but the tax they will pay in the other country. So this is the major problem with this concept of avoidance of tax. Let's discuss these two terms. Base erosion. Base here refers to the tax base. इरोजन मीन्स सिंपल, जैसे सॉइल इरोजन होता है वैसे टैक्स बेस का इरोजन हो गया. इरोजन होके वो कहाँ चला गया? मॉरिशियस चला गया, या लो टैक्स इकोनॉमीज जिन्हें बोला जाता है, लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन जिन्हें बोला जाता है, ये टैक्स वहाँ पे, ये इनका जो ओरिजिन ऑफ इनकम है वो वहाँ चला जाएगा, वो उनकी गवर्नमेंट को पे होना पड़ेगा. अब ये उनकी गवर्नमेंट को पे करेंगे, हमें क्यों नहीं पे करेंगे? ये WTO के, वर्ल्ड बैंक, ये गवर्नेंस के, वर्ल्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस के, ग्लोबलाइजेशन के कुछ रूल्स हैं जिनके अंदर इन्हें सिर्फ एक ही कंट्री में टैक्स पे करना होगा. ये कंट्रीज हमने और एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट. ये दो कंट्रीज इंडिया और मॉरिशियस, हम लोग इन्हें म्यूचुअली साइन करते हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, कि एक कंपनी पे डबल टैक्स नहीं लगाया जाएगा. उसको अवॉइड करने के लिए एक अग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशियस और इंडिया और स्विट्जरलैंड ने साइन किया था. और ये और कंट्रीज़ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, लग्जमबर्ग इज़ देयर, केमैन आइलैंड्स इज़ देयर, मकाओ, मोनाको, many low tax jurisdiction countries are there. Their purpose is just like they are small islands. So since they are islands, they cannot provide them infrastructure, they cannot provide them
the kind of infrastructure, logistical support, governance structures which are required for companies to run businesses. India in comparison is a huge country having huge manpower resources. 1 point 120 करोड़ की population है, लो cheap labor है हमारे पास, तो उसके चलते प्रॉफिट शिफ्ट हो रहा है उन कंट्रीज में. 30,000 करोड़ इंडिया के कोई बिग बिजनेसमैन, आई वुड से बिजनेसमैन ए और बी और एनीबडी, ही वुड टेक हिज 30,000 करोड़ टू दैट कंट्री थ्रू इलेजिटिमेट चैनल्स लाइक हवाला का चैनल है, और 2 नंबर के पैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. एंड देन यहाँ पे 2 नंबर के पैसे इज जस्ट दैट मनी ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड. ब्लैक मनी की डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन इज द मनी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड. और इसमें यहीं पे हेयर आई एम डिस्कसिंग मनी लॉन्डर्ड मनी एज वेल. लॉन्डर्ड मनी इज डर्टी मनी. ब्लैक मनी इज नॉट नेसेसरली डर्टी मनी. ब्लैक मनी कुड बी, सपोज आई एम अर्निंग एन इनकम ऑफ say 12 lakh rupees, so I am not paying tax on that. That becomes black money. Whereas laundered money is if I am earning the same money through some illegitimate channel, say lottery, सट्टा और ये सब जिन चैनल से अगर हमने रुपए अर्न करे हैं, then that is laundered money. That could be used for negative purposes, say terrorism, spreading terrorism, preaching terrorism, or spreading hatred or anything, or women trafficking, human trafficking, whatever you name it. So that is laundered money. Money generated through dirty ways is laundered money. Money on which tax is not paid is black money. Just remember that thing. So what a businessman does is he shifts 30,000 crore rupees from India to these countries. Any of these countries, say Cayman Islands, Mauritius is there, so they send money to it. Once the money has reached there, they would pay 2,000 crore rupees to the हवाला चैनल एजेंट, जिस चैनल के थ्रू उन्होंने शिप्स में छुपा के, एयरप्लेन्स में छुपा के पैसे ट्रांसपोर्ट करे हैं. हवाला एजेंट्स का नेटवर्क है ये, इलेजिटिमेट, हर कंट्री में होता है, पूरे वर्ल्ड में इट इज स्प्रेड. सो व्हाट दे डू इज they send the money and they charge a commission of say 2,000 crore rupees from that A businessman. अब A businessman के 28,000 करोड़ रुपए वहाँ पे पहुँच गए. Now he will invest those 28,000 crore rupees back in India from Mauritius, registering in Mauritius a company named ABC Company Limited, just by hiring a simple renting out a simple flat, और उसमें 2-4 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे लगा दिए, दोज हु विल क्लीन दी फ्लोर और एनी थिंग्स, एनी मिसलेनियस जॉब्स दे डू ओवर देयर. ड्राइवर्स, कार का शॉफर है, ड्राइवर है, दे विल डू ऑल सच मेनियल जॉब्स, एंड देन they are shown as the managing directors of this ABC Limited, on whose name 28,000 crore rupees invested in India. Now on 28,000 crore rupees, or say 30,000 crore rupees for convenience of calculation purpose, so 38,000 crore rupees pe in India they are 30,000 crore rupees pe they are earning a return of 10%. That is 3,000 crore rupees they are earning. Now if the same money would have been invested in India from India itself by registering ABC Limited in India itself, they would have had to pay a tax of rupees 3,000 crore ka 900 crore tax they would have had to pay in India had they been registered in India as a company ABC Limited. But in Mauritius they will have to pay a tax of just 5% of 3,000 crore profit that they have earned in 1 year. 3,000 crore, you can say 150 crores only, but here they have to pay 900 crores. So they shift their company to Mauritius or to any low tax jurisdiction country. The phrases you have to remember is low tax jurisdiction country. For your memorization purpose you have to memorize these names. What is last week in 2015 का ये editorial है हिंदू का business line का, you can look for it. I will provide a link below my video in comment section. So they presented a base erosion and profit shifting plan to G20 countries. G20 group of 20 large economies of the world है, to help them curb such tax avoiding tactics. Tax avoiding tactics है ये. The recommendations will be considered for adoption by G20 member countries. India is one of those members. Okay. What is it? BEPS refers to erosion of a country's tax base because of shifting of profits by multinational companies to other regimes with low or zero tax rates, as I have explained you earlier. So even though a company may do the bulk of its business in a big tax country such as the US,
it hides, it camouflages its profits as emanating from some low or no tax country in order to bring down its tax liability, tax देने की जो जिम्मेदारी है. It transfers the profits through sophisticated tax planning strategies to a letterbox company. Letterbox company is simply the flat that they have hired. Like वहाँ पे सिर्फ लेटर्स जाएंगे कंपनी के जो भी ऑफिशियल मेल होगा इंडियन अथॉरिटीज से, और जो भी वो बिजनेस कर रही है उसके रिगार्डिंग जो भी पोस्टेज उनकी आएगी वो इस फ्लैट में जाएगी जहाँ पे एक लेटर बॉक्स टंगा होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा. With just a mailing address and no real business activity in that country. Like real business activities in India, but they are operating from Mauritius. Set up in the low tax regime such as these countries I have mentioned earlier. As a result, the country which is the actual center of economic activity is wrongfully deprived of tax revenues. As a result, the country, in our case the India, which is actual center of economic activity, our labor, our electricity, our infrastructure, our railways, our everything, manpower, सब कुछ हमारे यहाँ पे, even IITians हमारे यहाँ के जिन पे गवर्नमेंट इतना कुछ खर्च करती है, IIM से पास आउट हैं, they are from our country, all the manpower resources from our country, but the tax that the government is the Indian government is legitimately entitled to is going to Mauritius. Why Mauritius is offering such a low tax rate to such companies? I have explained to you earlier. क्योंकि they have their own natural constraints, geographical constraints. Small countries, they can not even dream of having the big business activity as India can, as China can, as even USA can or Brazil can. So how do companies shift profits? Here's one illustration. Take a US based technological company that despite carrying out all product development and making the most of its sale in the US pays hardly any tax in the country. How does it achieve that? अब ये कैसे करते हैं? The company transfers the intellectual property rights that it holds over its products to its letterbox subsidiary, say in Mauritius, Luxembourg, Cayman Islands, Macau, Monaco, any other country. अब IPR क्या होते हैं? IPR हमने अर्न किए, जैसे कि कोको कोला के IPR हैं, कॉपी राइट्स हैं या जो भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो यूएस के किसी जिस बंदे ने वो खरीदे थे, वो उसने किसी मॉरिशियस की कंपनी को बेच दिए, से 3000 करोड़ में और 30,000 करोड़ में, जैसे हमने एग्जांपल लिया था. अब वो वहाँ पे 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया. अब वो वहाँ से 30,000 करोड़ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने इंडियन सब्सिडियरी कंपनी को वो दे रहा है कि आप इन्हें यूज़ करके यहाँ पे कोको कोला बनाइए और बेचिए. अब इंडिया इज़ अ हाई डिमांड कंट्री, हमारे लोग हमारा ही पानी कोल्ड ड्रिंक के रूप में पियेंगे, एंड द कंपनी कोको कोला कंपनी, द फेक कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड इन मॉरिशियस विल बी एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स. सो वो प्रॉफिट्स विल फ्लाई अवे टू मॉरिशियस. what we will get is peanuts, only peanuts. So but do note, though unfair, BEPS is not illegal. When companies engage in BEPS, they legally avoid tax. As I told you, black money होता है, और वो black भी नहीं रहता because they have legitimately taken this money to Mauritius by selling their intellectual property rights. और अगर हवाला के थ्रू जाता है, then that is black. Most of the Indian tax evaders who evade tax, not avoid. Avoidance of tax is legal, evasion of tax is illegal. Those who evade tax and send it through hawala channels. Panama Papers leak हुआ था इंडिया में, so that is what is happening. When companies engage in BEPS, they legally avoid tax simply by taking advantage of exemptions in a country's tax regulations. What also works in their favor are wide variation in tax regimes. ये variations कौन से हैं? इंडिया में जो 30% tax rate है और मॉरिशियस में जो 5% tax rate है. Why is it important? When the government deprived of tax revenues, BEPS has attracted the ire of tax authorities. Tax authorities का जो गुस्सा है, the angst of tax authorities and taxpayers the world over. BEPS is estimated to cause an annual revenue loss of 100 to 240 billion to these high tax jurisdictions like India, USA and other countries, which amounts to 4 to 10% of global corporate income tax revenues. जब भी कोई कंपनी किसी कंट्री में बिजनेस करती है तो उसे कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इसे बोला जाता है. This in turn means a higher burden on other taxpayers and less funds in government coffers. Coffers means government का जो खजाना है
फॉर फंडिंग वेलफेयर एंड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर इतना टैक्स हमारा 900 करोड़ रुपीज़ एज पर आर एग्जाम्पल अगर हमें मिलता, देन हम बुलेट ट्रेन इंडिया में लेके आ सकते थे, हम कोई और अपनी रोड्स को अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकते थे, हाई कैपेसिटी शिप पोर्ट्स बना सकते थे। बट since we are not earning that tax revenue, we are unable to develop our infrastructure. Tax savings from BEPS is give multiple multinational companies an edge over domestic companies who may lack the wherewithal to employ such strategies. टैक्स सेविंग्स जो उन्होंने करी हैं 900 करोड़ और 75 करोड़ के बीच में का जो गैप है 825 करोड़ रुपीस का, मल्टीनेशनल कंपनीज को एक और एज देता है, एक और उन्हें लीड देता है, जो कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज जैसे कि टाटा है उनको नहीं मिलती है। सो व्हाट दे डू इज दे विल बी इन्वेस्टिंग दैट 825 करोड़ रुपीज इन फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फ्रॉम विच दे विल इन्वेंट न्यू IPRs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि वो रजिस्टर करा लेंगे। हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं इंडिया की वो पीछे रह जाएंगी। Why should I care? Like BEPS is just not fair. When honest taxpayers pay up their share of taxes, like जैसे कि मैं सैलरीड हूँ अगर इंडिया में, तो मैं तो अपना 3 लाख रुपए से अगर मेरी इनकम ऊपर है तो मैं अपना टैक्स 10% के हिसाब से पे कर रहा हूँ। बट is it not me who is taking the entire burden of financing the infrastructure? So जो legitimate, जो genuine टैक्स पेयर्स हैं वो बेचारे टैक्स पे करते रहते हैं, और ये बड़ी बड़ी MNCs इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की मैन पावर यूज़ करके प्रॉफिट कमा के बाहर प्रॉफिट ले जाती हैं और कंपनीज को नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देती हैं। बट योर पर्सपेक्टिव कुड चेंज इफ़ यू हैपन टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ वन ऑफ दीज कंपनीज। अब क्योंकि मैं उस कंपनी में शेयर होल्डर तो हूँ नहीं ABC में, जो कि मुझे ज़्यादा डिविडेंड या प्रॉफिट मिलेगा, मेरा उस कंपनी में कोई शेयर नहीं है सिंपल भाषा में, तो मुझे उसका कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। अब द बॉटम लाइन इज टैक्स स्लैब्स आर डिजाइंड सो दैट वेल्दी पे मोर टैक्स, बट इट टर्न्स आउट दैट डीप पॉकेट्स आर अ हेल्प इन tax evasion too. So the line is self-explanatory. This is all under BEPS. For other economic related Indian economy related topics, please send me please mention in the comment section whatever topic you want me to create a video on, and whether you like it or not, please comment in the comment section. Thank you.